Morning, everyone. Good evening, everyone. Myself, C.S. Gupta. माइंड लर्निंग प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है. आज संडे स्पेशल प्रोग्राम में आज हमारे साथ न्यायिका चंद्रा जी हैं, जो बाय प्रोफेशन एक एचआर कंसल्टेंट हैं, इमेज कंसल्टेंट हैं और ट्रांसफॉर्मेशन कोच हैं. जो आज हमारा सेशन रहेगा उसका टॉपिक है लर्न टू एम्ब्रेस योरसेल्फ. आप सबको पता है हमारा माइंड एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ के अंदर. अगर हम 1 घंटा डेली अपनी माइंड लर्निंग पे देंगे तो हमारी लाइफ की क्वालिटी उससे काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है. इसी के तहत संपूर्ण का जो सेशंस हैं, हर संडे हम शाम को एक सेशन लेते हैं माइंड लर्निंग के ऊपर. नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट न्यायिका चंद्रा मैम टू कंटिन्यू अवर प्रोग्राम. ओवर टू न्यायिका मैम. Thank you so much. I am so happy to be on the SampoornMe platform. So, hello everyone. My name is Nanika. I am an image consultant, a soft skills trainer, a transformation coach, and an HR by profession. And I would first like to take this opportunity to thank the SampoornMe platform because I believe that they're doing some amazing work. One of the major things that we miss is हम अपनी mental wellness पर ध्यान कम देते हैं, and we are constantly talking about हमें physically fit होना है, nutritionally हमें अच्छा खाना है. All of that is important, but with that it's important कि हम अपनी mental wellness पर भी उतना ही ध्यान दें. We focus on how well we are doing mentally, how is our heart health, how are we feeling about ourselves, because all of this will directly impact how our life is going to be. So welcome to today's session. Today we are going to talk about how we can learn to embrace ourselves, and I would love if this could be an interactive session. So please keep putting your questions in the comments, or if that's okay with the organizers, आप अपने आप को unmute करके भी अपने questions मुझसे पूछ सकते हैं, and I would be really happy to answer them. So we'll begin, and thank you so much everyone from being here today on a Sunday. I am sure आप लोग सब अपने घर पे you want to spend time with your family, and all of that is also very important. But kudos to everyone who has joined in, because you are taking this time specifically to learn how you can take care of your mind, of your heart, of your spirit. So, focusing on how much you are doing for your mental health just shows that you are committed. So it already shows that you have that inclination to do something for yourselves. So let's begin. I would like to begin with understanding what the word embrace means. So I'm sure we have all heard about self-love, self-care, self-indulgence, but self-care, self-love, self-indulgence are repeated terms. I want to understand what embrace means for you. So if you can quickly put it in the chat box, I will of course go on with what embrace means for me, and I will share my insights on what it means. Yeah, so someone is writing that embrace means to physically love and hug someone. That's correct. That's the literal definition of embrace. And physical hugs, like we all know, they release a very powerful hormone in our body, right? Great. So embrace actually means कि आप किसी को पूरे दिल से accept करें, आप किसी को पूरे दिल से अपना माने, and आप उनको hug करें tightly. Yeah, so I see that someone's put in the chat box if we can request everyone to turn on their videos. Can we please do that? Thank you, Madhurma ji. Can I request everyone to, put their videos on and be comfortable? This is a safe zone. All right. Okay, please turn on your video whenever you feel comfortable. I would love to see your lovely faces, and let's begin. So embrace actually means that you accept and you love someone with all your heart. Yeah, so I have made a small abbreviation, embrace ka matlab,
And I want to share it with all of you because this powerful abbreviation is going to bring a very powerful shift in your mindset. Okay, so embrace is spelled out as EMBRACE. So E for embrace starts for me as encouraging. So embrace is आप अपने आप को कितना encourage करते हैं. You know, are you encouraging yourself? Because are you supporting yourself? Are you honestly and believing that, you know, that whatever I am doing is great? So I'm sure that most of us in this room are guilty that, you know, you just dismiss your past struggles. So most parents usually have this habit. अभी तक हमने जो किया है अपनी लाइफ में वो तो हो गया, मतलब हमें करना था तो हमने कर लिया. We dismiss our struggles constantly कि मैंने कर दिया, वो तो अपॉर्चुनिटी आ गई थी तो मैंने ले ली. You know, I wanted to do this for my children, तो मैंने hard work करा और हो गया. So the number one thing is that we become really hard on ourselves. So we have to accept ourselves. We have to believe that हम जो भी कर रहे हैं, it's actually something that's very special. We are moving out of our comfort zone. हम अपने comfort zone से बाहर निकलकर अपने family के लिए, for our children, for our spouse, for our parents, हम सबके लिए कुछ ना कुछ करते हैं. But we become so hard on ourselves that we don't accept. We will dismiss it constantly. और अगर हमसे एक चीज छूट जाएगी, then we start to judge ourselves कि, you know, I was supposed to do this but I did not do it. And then in that instance we invalidate all our struggles. हम एकदम से हमारे जितने struggles हैं उनको बोल देते हैं कि, you know, you didn't do anything much, it was just life and life brought it to you. But honestly, it was you who did it. It was you who decided to take care of your family. It was you who chose to do things for your family. And you should be proud of yourself. You should encourage yourself that, you know what, Tanika, you're doing a great job. How many of us really encourage ourselves that, yes, I can do it? Amazing. So the M in embrace stands for mindful. Now, we know that SampoornMe promotes being mindful, being mind wellness. We talk about it. But what does mindful mean? We all have a voice inside our head. एक ऐसी आवाज होती है जो हमारी खुद की आवाज होती है जिससे हम बातें करते हैं. तो आपकी आवाज आपसे क्या कह रही है? You know, if I constantly feel that I am not confident, you know, I'm not good for this, I am not enough, I am not capable, मैं ये job interview दे ही नहीं सकती क्योंकि मुझे पता है मुझे नहीं मिलेगा, या I can't go to this college because it's beyond my league, या फिर मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई attention नहीं देता, I am not beautiful. So there are so many things that we constantly tell our mind. ये होती है हमारी negative self talk. We are constantly engaged in self sabotaging कि हम क्या नहीं कर सकते, हम कैसे sufficient नहीं है, हम enough नहीं है. And you see what happens is, so one of my mentor, Miss Samira Gupta, she told me that the brain does not have a brain of its own. आपके दिमाग के पास खुद का दिमाग नहीं होता, वो हर वो चीज बिलीव करता है जो आप उसे बोलते हैं. तो अगर आप अपने ब्रेन को बोलेंगे that, you know, you're not confident, you cannot do this, you cannot do that, your brain will believe you. So if I say that, Nanika, you are not confident, and my brain believes that I'm not confident, the next time I have to go on the stage and talk, my brain will immediately say, Arey, but how will you do it? You're not confident. How will you speak in front of so many people? And that in that instance, I will realize the power of negative self-talk. So how and why I should avoid it is this reason. I should be mindful when I'm talking to myself. I should always say that, you know, I am doing a great job. I am capable. I can do this. I am enough. I am confident. I am strong. When we talk about positive affirmations, these are not just affirmations. आपको बस ये चीजें बोलनी नहीं है, आपको ये चीजें feel करनी है. You have to believe them, you have to accept them,
And that is when you will be completely sure that, I can do this. I am made for this. I can take on any challenge in life. हम कितनी बार खुद को सेल्फ साबोटाज कर देते हैं और हम समझते भी नहीं है. अगर खाना अच्छा नहीं बना, समथिंग एज बेसिक एज दैट, वी स्टार्ट टू थिंक कि यार मैंने कैसा खाना बना दिया, घर में सबको ऐसे ही खाना पड़ा. We should get rid of guilt, we should get rid of regret, and we should start acknowledging and appreciating. So embrace. Next alphabet is B. B stands for bold. Now, why do we need to be bold? This is one of the main things that most middle-aged men and women do, is that they neglect their needs. हमारे parents, जो men and women in their initial 40s and 50s, they always neglect their needs. They will not go for walks. When you ask homemakers, why don't you try to exercise, or why don't you take some time off for yourself? They will always have some responsibility on their shoulders that will come out as, I have to cook, मेरे पास time नहीं होता. I have to go to office, मेरे पास time नहीं होता. These are little things that you do every day in your life that stop you from loving yourself. So you have to be bold. You have to be bold and tell people that, you know what, I want to focus on my personal health also. So all parents, all fathers, mothers, grandparents, it is okay that you have responsibilities and you are doing them well. But taking out half an hour, आधा घंटा आप अपने लिए निकालिए, सुबह निकालिए, शाम को निकालिए, दिन में जब भी आपको टाइम मिले, आधा घंटा आप अपने लिए निकालिए, जिसमें आप अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जहां पर आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं. आप कोई किताब पढ़िए, आप न्यूज़पेपर पढ़िए, समथिंग एज बेसिक एज वॉक ऑन ग्रास. आप नंगे पैर सुबह ग्रास पे चलेंगे, इट विल गिव so much calmness, it will bring so much groundness in your life, and it will change. So this change will of course not happen suddenly कि 5 दिन करा and your life will transform. It will happen gradually, but in those moments you will become bold. You will start to accept that I have needs and I acknowledge my needs, और मैं अपना ध्यान रखूंगा या रखूंगी, because वो भी important है. फैमिली की हेल्थ के साथ मेरी हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, राइट? देन आर स्टैंड्स फॉर बीइंग रिस्पेक्टफुल. वन ऑफ द मेजर कंप्लेंट्स दैट पीपल हैव इज कि मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलती, मेरे घर वाले मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते, आई एम नॉट ट्रीटेड रिस्पेक्टफुली. आस्क योरसेल्फ, डू यू रिस्पेक्ट योरसेल्फ? How many times do you put forward your needs? How many times do you set boundaries and say no? आप सुबह से लेकर रात तक हर किसी के लिए घर में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं. आप अपने लिए क्या करते हैं? How many times are you telling people that what, if your child comes in and asks for a favor, आप उसे बोलते हैं बेटा not right now, I am trying to spend some time for myself, with myself. You have to do that, because the moment you set boundaries, you become respectful to your own self. जब हम खुद की respect करेंगे, that is when people from outside will start to respect us. Okay? Then A, embrace A. A stands for appreciative. Like I said, if you cook good food, say to yourself, you know what, Nanika, good job. I am proud of you. If you go for a walk, again, pat your back, say good job, you're focusing on your health. If you are reading a page of a book, say good job, I am glad you did this. So you have to constantly appreciate yourself. Now, right now, to some people, I'm sure this may sound like these are little things that we do and they don't matter really, and I don't have the time to stop and appreciate myself and pat my back. But your brain is wired to start to learn from trivial things. जब हम छोटी छोटी चीजों के लिए अपने आप को अप्रिशिएट करेंगे, अपने आप को वैल्यू करेंगे, दैट इज व्हेन हम अपनी लाइफ की बड़ी चीजों को अप्रिशिएट करेंगे. हम हमेशा सुनते हैं ग्रैटिट्यूड पे करो, ग्रैटिट्यूड जर्नल फिल करो, बी ग्रेटफुल फॉर ऑल दैट यू हैव, बट वी आर नॉट इवन अप्रिशिएटिव ऑफ आवर ओन सेल्व्स. हाउ विल वी बी ग्रेटफुल फॉर अदर थिंग्स?
So we have to learn to appreciate ourselves. That's number one. Appreciate whatever you are doing, even if it's something as basic as आप 10 minute exercise करें, आपने 10 minute stretching करी, आपने 5 minute meditation करा, you wrote a page in your diary to tell yourself how happy you are. Appreciate yourself for everything. Then C stands for courageous. Now courageous, why? It's also very important. I'll tell you how. हम सब सोचते हैं कि हम कॉन्फिडेंट नहीं है, हम ब्यूटीफुल नहीं है, हम आई एम नॉट इनफ, आई एम नॉट सफिशिएंट, मैं अपनी फैमिली के लिए सब कुछ प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ. बट imperfections सब में होती है. Nobody is flawless in this world, and we have to accept ourselves the way we are. We have to tell ourselves that, you know what, even if I'm not confident, I still love myself. I don't have to be confident all the time. It's not important and it's not possible. I get this asked so many times that how can I be self-confident all the time? And I will talk about this later in the session, that being self-confident 24/7, 365 is not possible. हो ही नहीं सकता. There is no one in this world who is confident 24/7, 365. And we'll talk about it why. And then the last word of embrace ends again with E, which means empathetic. How empathetic are you towards yourself? आप गलतियां करते हैं and then do you beat yourself down that, you know, I did this, why did I say this? कभी घर में कोई argument हो गया and then you're constantly being like, यार मैंने ऐसे क्यों बोला? I shouldn't have said, I should have, stayed calm, I should have avoided speaking in anger. So we do things and then we regret. How many of you feel guilty of saying कि मैंने past में ये गलती करी थी? We are constantly thinking कि मैंने past में ये कर दिया था. I did this and I wish I had not done that because then that would change my life. So thinking about the past and regretting about it and then constantly worrying about the future is like keeping your legs in two boats. कहावत है ना, दो नाव में पैर रख के चलोगे तो डूब जाओगे. So that's what we do. हम हमेशा रिग्रेट करते हैं, हमने पास्ट में ये कर दिया. हम हमेशा वरी करते हैं कि फ्यूचर में अगर ऐसा हो गया तो how will my life turn out? We never live in the present, which is the biggest problem. And we will address how we can learn to start living in the here and now from today, from this moment. So everyone who is right now multitasking, listening to me, also using their phone, also maybe cooking in the kitchen, also trying to watch the television and listen to me with their lead on, multitasking doesn't happen. Nothing will help you, because then if I ask you after 1 hour कि आपने टीवी में क्या देखा, you will not know because you were half present there. And if I ask you what did you learn from the session, you will again not know because you were half involved in the TV. So start focusing on one thing at a time. Even something as basic as when you're drinking water, focus on drinking water. So I want to do one exercise quickly. Do all of you have a glass of water with you? A bottle of water, glass of water. Can all of you please get a glass of water? We'll do one quick fun exercise. So this is an exercise that that I have heard over the internet, and my mentor shared it with me, and it has worked wonders for me. So I thought I will share it with you today. So I'll wait for another few seconds for everyone to get a glass of water. Till then, if you have any questions, please feel free to put them in the chat box and I would be happy to answer them. Great. So I hope that all of you have got a glass of water by now. All right. So I want all of you to hold it with both your hands. If you are using a phone, it's all right. You can hold it with one hand. Those who are not, hold it with both your hands. Hold it close to your heart. Close your eyes and pour everything that you have in this glass of water.
Say everything that you want, pour it into this glass of water. Think to yourself and say it out loud. I pour happiness in this glass of water. I pour confidence. I pour courage. I pour all the beauty and wellness in this world into this water. I pour health and I pour abundance. Abundance of mind, abundance of health, abundance of wealth. Pour everything, every ounce of positive energy into this water. I set a beautiful intention, and when I drink this glass of water, it will nourish every cell of my body. It will oxygenate every cell of my body. I want you to slowly open your eyes whenever you are ready and drink this water. Let all of this water go inside your body and feel it. Do you feel a difference? Until today, drinking water was an exercise. करना है, प्यास लगती है तो पी लिया. How many of us mindfully drink water? How many of us set intentions before doing anything in life? The moment we do that, it will shift everything. You know, my mother always used to say that when you eat food, but you're busy somewhere else, it will not give you the right kind of nourishment. आपको पोषण मिलेगा ही नहीं if you're busy on your phone or if you're watching TV, and that's true. You have to put your attention to one thing. For maximum time, I think it was an era thing that we felt pride in saying, मैं multitasking कर सकती हूँ. You know, I can do this, I can do that. मैं खाना भी बना सकती हूँ, मैं गाने भी सुन सकती हूँ, मैं डांस भी कर सकती हूँ साथ में. So all of this is great. If it helps you rejuvenate in the kitchen, continue doing it. But when you're doing one activity, put your full attention to that activity. Because otherwise आपके पास टास्क के ऊपर टास्क पाइल अप होते जाएंगे और आप टेंशन में रहोगे. You will constantly think about, oh, I have to do this, oh, I have to water the plants, oh, I have to switch on the motor, oh, I have to switch off the light of that room, oh, have my children come, have my children eaten. Stop worrying. Take one task at a time. Your mind also needs rest. You don't have to be on the treadmill 24/7. You have to be on the treadmill only for 15 minutes in a day. That's also for your physical health. Your mind does not need to be on the treadmill. You have to pause. You have to take deep breaths. You have to focus your energy on your well-being. Unity of mind, heart, and soul. Very, very important. So, you know, why self-love, self-care, self-respect, self-confidence, self-worth, self-esteem, ये सारे वर्ड सेल्फ से क्यों शुरू होते हैं? Does anyone know why all of these words start with self? Because you have to go inwards. Self का मतलब है that you have to go inside and you have to find out what's imbalanced. ऐसा क्या है जो मुझे अपने अंदर चेंज करना है जिससे मेरी लाइफ में ये चीजें चेंज हो जाए. That's the change that will happen immediately. So I have 4 tips here that can help us to learn to embrace ourselves. So number 1 tip is to indulge in positive self-talk. So now, since most of you have turned off your camera, I would be really happy if you could turn them on. But if not, I want you to put one sentence in the chat box that you will start to say to yourself from today. One sentence, one positive sentence that you appreciate about yourself. So I would like to begin with that, Nanika, I'm proud of myself for being myself, for unapologetically being myself. I want all of you to write one sentence
one powerful, appreciative sentence about yourselves in the chat box, or you can say it. Please unmute yourself and share it with all of us. Amazing, Madhurima ji. I feel happy throughout the day. That's such a superpower to have, to be happy throughout the day. Great. We'll come to you to know the secret. How do you do that? So Tejinder Palji is saying, proud of being myself as on date. Amazing. Amazing. Because we get caught up in pretense. हम अपने आप को भूल जाते हैं. Well done, Tejinder Palji. I'm so happy that you're saying that you are proud of being yourself. Great. I would love to see what other people would like to say about themselves. And it's not just for me, it's honestly for you, how you feel about yourself. If you want to unmute yourself, go ahead, do that. Okay, ma'am, I'm proud of myself that I have started taking out time for myself, for my health. That's amazing. And it's because of SampoornMe team. Absolutely. I started the session with saying that the SampoornMe team is doing some great work on helping people taking care of their mind, body, and soul. So all of these three synced is so important. And this, I think, is one of the very few platforms that's focusing on all three. So good job. Exactly, ma'am. Even I'm trying कि at least 1 घंटा चाहे सुबह चाहे शाम को अपने लिए निकाल के चाहे योगा करो चाहे डांस करो. That's it. Amazing, amazing. I'm so happy to hear that. Yes, would someone else want to share? Okay, so someone has shared that everyone should know why he or she has come to this earth. Absolutely. Everyone has a purpose in life. Everyone. And how will we know that purpose? I will touch upon that briefly in the session today. So Mr. Surojji is writing, I will say that I will finish my task today with a positive mindset. Good job. It's so difficult to continue to have a positive mindset. हम अपने आप को इतना burden कर लेते हैं and then we end up doing nothing because we are constantly thinking. एक कहावत है, I am busy being busy. So I'm constantly thinking मुझे बहुत काम है, बहुत काम है, बहुत काम है, but मैं काम नहीं कर रही हूँ. So I'm busy here, not busy physically. All right, so let's go ahead. So this was on self-talk. Now your second point to embracing yourself is to be grateful. Now we've all heard about gratitude journals and हम सब सोचते हैं कि हम सोने से पहले 3 चीजें ऐसी अपनी लाइफ में लिखेंगे जिनके लिए हम grateful हैं. But I have noticed this over a period of time that what people start to do is कि हम सारा credit किसी और को देने लगते हैं. इसे कहते हैं imposter syndrome. We don't believe that we are capable of achieving all of this. So for example, I remember coaching one of my clients in the past week and she shared with me that Nanika, ये opportunity मेरी life में आ गई थी तो मैंने ले ली. मतलब it came out of nowhere. And I replied, agreed. Maybe that opportunity came out of nowhere, but you identified that opportunity. You said yes to that opportunity and you took action for that opportunity. So many people miss out on opportunities that are right in front of you. So stop saying that, kismat ne kar diya. Start accepting that you are creating causes for all the good that is happening in your life. You are responsible. You take ownership. Your life is a choice every single second that you are making. Today, all of you made a choice to join this session when you could just think of switching on the TV and relaxing. You made a choice to focus on your mental wellness. Good job. Praise yourself. Pat your back. Come on, everyone. Do it now. I'm proud of myself for joining this session. Then the third point, like I said, is living in the here and now. There is a quote which says that regretting the past and worrying about the future will change nothing. The only thing that will change is what you do in the moment. So like she shared that, she's taking out 1 hour every day in the morning or in the evening to take care of her physical health.
So she is making a choice today that will result in a brighter future. She will be healthier in the future. Why? अभी वो ये नहीं सोच रही है यार फ्यूचर में ना मेरी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, I should be healthy, I should be happy. She is creating causes right now so that her future is healthy, so that her future is happy. We all should do that. I'm sure all of you are doing that already because you all took this decision to come to the session today. The fourth point is that you have to know when to pause and when to start. इसका क्या मतलब है? हर किसी की लाइफ में there are certain days when you don't feel too well. आपको कुछ दिन होते हैं जब आप सुबह से उठते हैं और आपका मूड खराब होता है, you feel low, you don't feel like doing anything, आप सब कुछ आधे मन से करते हो. Those are the days when you have to identify that आपका कप, आपका ग्लास खाली हो रहा है. An empty cup can never pour into another. अगर आप अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने स्पाउस के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हैं, then you have to feel full inside. आप यहाँ पे क्या फील कर रहे हो? Are you feeling emotionally drained? Are you feeling physically drained? What is the feeling inside? ऐसे टाइम पे you should pause and you should self coach. Self coach का मतलब क्या होता है? सेल्फ कोच का मतलब होता है जब भी आप लो फील कर रहे हैं, जब भी आप अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, जब भी आप स्कैर्ड हैं, फियर आ रहा है, एंजाइटी आ रही है, कोई भी ऐसा नेगेटिव इमोशन जब आपकी लाइफ में आता है, उस टाइम पर आप क्या डिसीजन लेते हैं? व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट यू कैन आस्क योरसेल्फ? हाउ इज दिस सिचुएशन गोइंग टू हेल्प मी ग्रो? ओके, व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम दिस सिचुएशन? व्हाट कैन आई डू टू मेक दिस सिचुएशन बेटर? How can I change my life from this situation to something that I desire? So constantly coaching yourself, constantly thinking कि मैं क्या कर सकती हूँ अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए. That is when you will be able to identify what is stopping you. So number one, when you feel your cup is empty, cup यहाँ तक भरा है, great. Give everything you have, all the love, all the care, all the compassion to your family. अगर कप कम हो रहा है, आप ड्रेन्ड फील करेंगे. कप थोड़ा और कम हो गया तो आप और ड्रेन्ड फील करेंगे. यू विल नॉट हैव एनी एनर्जी लेफ्ट. और अगर कप खाली हो गया, आप अपने फैमिली को क्या दोगे? इफ योर कप इज एम्प्टी एंड यू स्टिल कंटिन्यू टू डू, देन यू विल गिव आउट नेगेटिव इमोशंस. यस, आई सी अ रेज ऑफ हैंड. प्लीज आस्क. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही. ओह, इज इट? अब आ रही है? नहीं मैम. ओके मैम, मैं तो दोबारा ज्वाइन करती हूँ. I'll join again. वॉइस इज क्लियर. आप कंटिन्यू करें, उनकी शायद प्रॉब्लम है माइक में. ओके. I'm not able to listen properly. I'll join again now. या प्लीज आप ज्वाइन दोबारा से करें, आपको आवाज आ जाएगी. आपकी तरफ से कुछ स्पीकर में प्रॉब्लम है. All right. Thank you, Sunilji, for the clarification. I thought participants are not able to listen to me. Thank you. Please continue. Yeah. So we were talking about that we have to learn to pause. कब रुकना है और कब वापस start करना है. So आपके भी bad days होंगे and you have to accept it, stop, and then you have to re-find out that what is it that I can change to re-energize. You know, so listen to some good music. Go garden if you like to do that. Take care of your plants. Cook something nice. Whatever in this world makes you feel rejuvenated, do that. Take some moments of mindfulness. Self-coach yourself. अपनी attention यहाँ ले आइए. Think about what you are feeling. What is your inner image? Why are these emotions being triggered? ऐसा क्या हुआ कि मैं इतना dull feel कर रही हूँ? And then what can I change? It's all about you. It is your responsibility. You are feeling good is your responsibility. You have to take it and you have to self-coach yourself. So these were 4 points that would really help you to learn to embrace yourself. Point number 1 was self-talk. Point number 2 was being grateful but not letting imposter syndrome set in. Point number 3 was to be present in the moment. And point number 4 was to know when to pause and when to restart. Okay. Do we have any questions until now?
Please ask your questions. What was the second point? The second point is being grateful. Being grateful and appreciating आपका contribution आपकी life में क्या रहा है. Ma'am, can you repeat fourth one? Actually, मेरा connection lose हो गया था, मैं सुन नहीं पाई थी. I'm so sorry. Absolutely. I would love to. Kindly repeat all the four. We will note down. Yeah. So point number 1 is self-talk. आप अपने आप से कैसे बातें कर रहे हैं. You have to be positive. You have to be confident. You have to believe in everything that you're saying. Point number 2 is be grateful. Grateful and appreciative. सबसे पहले you thank the universe for all the blessings you have, and number 2 you talk about your contribution in your life. मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है मेरी लाइफ की. अगर मैं खुश हूं तो वो मेरी वजह से मैं खुश हूं. यू नो, आई कंप्लीट माई सेल्फ. पॉइंट नंबर 3 इज टू लिव इन द प्रेजेंट. ना हमें फ्यूचर को रिग्रेट करना, ना हमें पास्ट को रिग्रेट करना है, ना फ्यूचर की वरी करनी है. आई हैव टू बी प्रेजेंट इन द मोमेंट. Start with little things. Drink water with consciousness. Eat food with consciousness. Read a book with complete attention. A mind that's at 10 places is nowhere. So be at one place completely present. जब आप बिस्तर से खड़े हो रहे हो, don't think about anything else. Think about standing up from the bed. छोटी छोटी चीजों पे फोकस करके the larger things will change. And point number 4 is to know when to pause and to know when to restart. अगर आपका कप खाली हो रहा है, you have to take a day off. आप थोड़ा टाइम लो, अपना कप वापस भरो, अपने लिए चीजें करो. You know, this does not mean कि आप कहीं बाहर घूमने चले गए, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ छाड़ के. आप अपना कप घर में 15 मिनट में भी फिल कर सकते हो. How can you do that? You have to find it out for yourself. So for me personally, I think reading a book or listening to music work wonders. You find out what works for you. Some people like to vent it out. Call a friend, उनसे बात करो, उनसे साथ डिस्कस करो. आप अपने स्पाउस से बातें कीजिए. You know, you want to write it in a diary, write it in a diary. That's another brilliant way. Whenever you feel negative emotions, जब भी आप down feel कर रहे हैं, आप low feel कर रहे हैं, आप under confident है, stressed है, you know, there are a lot of things happening in your family and they are really burdening your mind. Take a moment, write everything down on a paper and identify what you can do to change it in that moment. And suddenly there will be solutions all over and this will work. Just have concentration, write everything down and focus on the solution, not the problem. Focus on resolving. So another question is that बहुत conflicts हो रहे हैं घर में and you know you're not able to handle those conflicts. So one of the biggest issues with conflict is that we don't love ourselves enough, which is why we are not able to give the other person the same kind of compassion. अगर दो स्पाउस में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, then both the spouses have to individually love themselves enough and they have to see the problem together. So it's not this one versus this one, it's these two people versus the problem. So whenever there is a conflict, you have to sit down, identify the problem कि कहाँ पे हमारी लड़ाई हो रही है, कहाँ पे व्यू पॉइंट का फर्क है जिसकी वजह से हमारे बीच में लड़ाई हो रही है. Sit down together, focus on the solution, think कि हम क्या कर सकते हैं जिससे ये जो प्रॉब्लम है ये रिजॉल्व हो जाए, and then there will be harmony between both of you in the house. It's so much important that you be present. You know, maximum problems happen with I am talking to you but you're busy on the phone. If right now anyone asked me a question, for example Sandeep ji asked me a question and I picked up my phone and I'm like yeah okay what, it will immediately bring a disconnect. वो कहेंगे मैं इनसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और ये फोन पर लगी हुई है. I am being disrespectful. Similarly, when your children are asking you things, give them full attention. When your spouse is talking to you, give them full attention. When you're using the phone, use your phone with full attention. That time, don't speak to other people. It's about respecting. खुद को भी रिस्पेक्ट करना है, दूसरों को भी रिस्पेक्ट करना है. जब हम खुद को और दूसरों को रिस्पेक्ट करेंगे, इन रिटर्न हमें वही मिलेगा.
All right. So any questions? Are these points clear? Yes, ma'am, clear. All right, great. So I have a couple of more points, but I think we are running short of time. So I would like to address questions right now. If you have any, otherwise I will quickly cover a few more points. I think presently there are no questions. You can carry on. All right, okay, great. So going forward, we will talk about the difference between self-love and selfishness. Mainly I think homemakers have this question कि if I take some time out, अगर मैं अपने ऊपर ध्यान देने के लिए time निकाल लेती हूँ, then my family will start to think that I'm being selfish, which is not true. I think even fathers face this. They don't spend time on the sports they love, on the books they like to read, but it's very important that you give time to yourself. So we'll talk about the difference between self-love and selfishness. Now I'll start with selfishness. How many of you feel that going for shopping or going for a massage or going out and eating at a fancy place really helps you rejuvenate? Do we feel that? Yes, ma'am. Yeah. Okay. Yeah. So it does. Okay. It's a part of taking care of yourself. However, selfishness would mean when you overindulge in it. If you constantly, हफ्ते में 3-4 दिन ऐसे होते हैं when we feel low, when we are not feeling too good. ऐसे moments हो जाते हैं, ऐसी कोई बातें हो जाती हैं that make us feel low. If for every thing we start to compensate ourselves with a new dress or with a fancy meal, it will become too much, right? And then eventually the charm will go away. You will not feel happy because these things only bring in temporary happiness. They will only rejuvenate you for a small period of time. What you need to do, what self-love actually looks like, is the things that you don't like to do. So selfishness would mean eating junk food every day because you like it, but self-love would mean choosing to eat healthy every day. Because that's what you need, not what you want. You need to eat healthy. You need to exercise. Everyone on the SampoornMe platform is doing this. You're doing this because you love yourself. You take out time to work out every day because you want to contribute to your overall well-being. You're also joining sessions on mental wellness because you want the oneness of your mind, body, and spirit. And that will happen only when you do self-love. Focus on what you need, not what you want. So this is a rule in shopping also. We usually give it in the image consulting world that, okay, someone is writing live life king size. Of course, live life king size. Also know when to stop. Because don't go in overindulgence. It would actually harm your health more than you think it can, right? So yeah, I was going to say that even when you go to shop, whenever you're buying a new thing, ask yourself, do I need it or do I want it? If I need it, I will buy it. But your mind is also very smart. It will trick you into, you need this. You need it. You have had a bad day. I know you need to eat this pizza right now. I know you need to eat a piece of chocolate, but you have to stop yourself. Everything is a choice. Everything is a conscious decision you are making for yourself. Don't restrict yourself, but also compensate for the good times. All right. So next point in selfishness would mean that you're always focusing on your own personal needs. I need time, I need sleep, I need food, I need shopping, I need do this, I need to do that. Self-love is about feeling love for yourself and also giving it to people around you. So instead of I need, we need family time together. We need to spend time together. We should watch a movie together. We should play this game. I will read this book with my children. So constantly find ways to indulge with a common self-love. So take some time for your personal self and then spend some time with your family. It's very important for bonding. And when there's a happy home, there's a happy you. And when there's a happy you, there's a happy home. It's interrelated.
So if you are not happy, home will not be happy. If home is not happy, you will not be happy. Spend time in both places. Don't ignore either. Then selfishness is also leads to comparison. So I know I have done this. I am sure most of you must have done it. You know, you see someone and you think, iski life perfect hai. Iske, you know, I wish I had the job she has. Then I will look at someone else and I will think, I wish I had children like her. Then I will look at someone else and I'll see, oh, what a lovely house. I wish I had a home like this. So it's not bad to desire, but it's really bad and harmful to compare. Because if you constantly are in the zone of comparison, you will always think that you don't have sufficient. You are insufficient, you are incapable, and that will really set into your heart and it will bring out only negative emotions. So every time you see something beautiful with someone else that you have a desire for, अगर आप किसी के पास कोई चीज देखते हैं और आप चाहते हैं कि आपके पास भी वो चीज हो, look at it and say, oh wow, that's a beautiful house. What can I do to make my house pretty just the way it is? Maybe add a new showpiece or maybe add a few planters. So do whatever, but don't compare yourself. Now I have a beautiful analogy to share regarding this. Do you know there are different kinds of plants? कुछ इंडोर होते हैं, कुछ आउटडोर होते हैं, कुछ को ज्यादा सनलाइट चाहिए, कुछ को इनडायरेक्ट सनलाइट चाहिए, कुछ को सनलाइट नहीं चाहिए, कुछ को पानी चाहिए, कुछ को नहीं चाहिए, कुछ को थोड़ा चाहिए. Every plant has different needs. Similarly, human beings के भी अलग-अलग needs होते हैं. Identify आपके क्या needs हैं. Maybe someone else desires to have, you know, to be married and be happy and have children by 30, but some other people can have career goals. They want to focus on personal stability by 30. Identify आपको क्या चाहिए, what makes you happy. भेड़ चाल में चलने वाली life is meaningless, because then eventually you will feel like, what am I doing with my life? That's not how I wanted to live, and that's not how you want to live in future. So if you feel that you are doing it, this is your moment to change it. From today, start writing 3 things that you are good at, and this is how you will do. So for example, if I feel that I speak to people nicely, every day I will write 1 thing. If I speak to people nicely every single day, and by the end of the week, I will write it down in my notebook that today I spoke to my mother nicely. Then next day I will write probably today I spoke to a coworker nicely. Today I spoke to a client nicely. Then by the end of the week, I know that I have good communication skills. So you have to, at the end of the day, write 3 things जो आपने पूरे दिन में अच्छी करी. And by the end of the day, आप अपने pattern को analyze करो and identify आपकी strength क्या है. You will immediately know what is good for you, what is going to work for you. So Tejinder Palji is saying what is said is true for a particular segment of people. There are people whose priority is to feed their family. He cannot think other things. Tejinder Palji, I would like to address this. If you can unmute yourself and give me more clarity on this. What, ma'am, what Ji. I want to convey, there are so many type of people in society, houses, their priority is different. Somebody has bad health, he is thinking of health. Somebody has need to eat, what to eat in the evening, how to eat, different thing. And some people have different problems. So what I want to convey, what you are saying, that only those segment of people which can afford your fee and come to you, they can of course benefit it. But those who cannot approach you, but they are suffering, what we can give message for them? Yeah. So everything जो आपने share करा है, that is true, and I completely acknowledge it. However, I don't think आपको मेरी ज़रूरत है to, you know, be happy, to start loving yourself.
So of course, anyone can reach out to me anytime. My handles will be available with you. But even if आपको लगता है that you cannot approach someone, I was going to cover this point that nobody, किसी को भी किसी की जरूरत नहीं होती. Okay, and it's very important कि हम ये समझे. हम हमेशा सोचते हैं that some other person will complete me. That's not true. I complete myself. और जैसा आपने कहा, आपके पास हर किसी की अपनी प्रॉब्लम्स है. किसी को हेल्थ इश्यूज है, किसी को फाइनेंशियल इश्यूज है, किसी को फैमिली हार्मनी के इश्यूज है, किसी को मेंटल वेलनेस के इश्यूज है. Everyone has 15 minutes in their day to take out. 15 मिनट निकालिए और अपने ऊपर ध्यान दीजिए. 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट. Is it too much to ask for? Can you take out 15 minutes every day? Yes, ma'am. Yes. Yes, Okay. everybody can do. Great. 15 मिनट निकालिए, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, whenever it suits you. उन 15 मिनट के लिए आप अपना अटेंशन सिर्फ अपने ऊपर लाइए. Ask yourself, आप अपने लिए क्या कर रहे हैं? Are you focusing on your physical health? Are you exercising? Are you eating well? Are you able to take care of your mental wellness? अगर आपको लगता है कि आप किसी भी एक एरिया में लैक कर रहे हैं, then ask yourself, what can I do? You don't need me to do that for you. आपको अपने लिए करना है. आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है. आप अपने बच्चों का भी ख्याल रखते होंगे ना. उन्होंने कब खाया, उन्होंने स्कूल अटेंड करा, उन्होंने होमवर्क कंप्लीट करा, उनके एग्जाम्स में कैसे मार्क्स आए. Then why can't you take care of yourself? It's not a science. आपको अपने लिए 15 मिनट निकालने हैं, अपने हेल्थ के लिए सोचना है, अपने मेंटल वेलनेस के लिए सोचना है, अपने इमोशंस को एड्रेस करना है. क्योंकि अगर आप अपने इमोशंस को नहीं एड्रेस करेंगे, they will start to bottle up and one day that bottle will burst on your family only. So when you don't address your emotions, you are actually harming your family, because that will explode one day and it will become a big argument in the house. And that's true. So focus, आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने इमोशंस को एड्रेस कीजिए, and it will help you feel lighter. Talk to your spouse, communicate. Communication is the key. With your children, with your spouse, with everyone, with your own self. All right. So I will talk about one last point, which is that sometimes selfishness, जैसे आपने कहा कि it can sound like you're being selfish, you're being too needy. आपको हमेशा कुछ चाहिए. आपको चाहिए कि आपको अटेंशन मिले, आपको चाहिए आपको रिस्पेक्ट मिले, आपको चाहिए आपको लव मिले. So all of these are basic human needs. You have to accept that you have requirements for them. But over needing these requirements can also be self-sabotaging. Now, I'm sure you must have heard of Jay Shetty. He shared one quote that putting the responsibility of making you happy on someone else is selfish. You complete yourself. You make yourself happy. Your children will only add to your happiness. Your spouse will add to your happiness. Your parents will add to your happiness. You make yourself happy. So there's a question, we have to live for self or others. You can live for others only when you truly live for yourself. Like I shared, अगर आपका कप खाली है, आप दूसरों को 100% नहीं दे सकते. आप half-heartedly दूसरों को देंगे. So okay, tell me, if I am not feeling happy today and my family is celebrating, मेरा mood उस पूरे celebration में कैसा होगा? I'll be irritated, मैं थोड़ी grumpy रहूंगी, मैं side में खड़ी रहूंगी, मैं शायद काम में help नहीं करूंगी. But if I identified that I'm not feeling happy, and before the celebration started, I sat for 15 minutes with myself, I addressed my emotions. I asked myself, Nanika, what are you feeling? Okay, I'm feeling sad. Why are you feeling sad? What happened? I'm feeling sad because I had an argument with, say, a friend. Okay, and okay, is that friend here right now? No, she is not. Does it affect you? Yes, it does. But will your family be affected when that argument with the mood that you're carrying? Yes, my family will be affected. Can I delay that feeling right now? Can I talk to my friend, call her and resolve the argument and then go back and enjoy with my family? Yes, I can do that.
I call my friend and I tell her that, you know what, I think it wasn't necessary, हमें लड़ना नहीं चाहिए था, and I love you. And she said, yeah, I agree, I love you too. It's actually easy to resolve conflicts. हम उसको complicate करते हैं क्योंकि हम overthink करना शुरू करते हैं. We start to overthink. उसने ऐसे क्यों बोला, उसका मतलब क्या है, उसने ऐसे कैसे सोच के बोल दिया, I don't agree with her, how dare she say this. Stop overthinking. Talk directly. Say, when you said this, I did not feel nice about it, and I really value the relationship you and I have, and I would request you to not repeat it. What do you think the other person will say? नहीं तुम्हें नहीं पसंद, मैं फिर भी यही करूँगा. No, right? That person will say, okay, I am glad you spoke about it and I will try not to repeat it. The conflict is resolved. End of it. Don't bring it up again. Go enjoy with your family, be around your family, friends, have fun, eat food, be in the moment. Enjoy every moment of life. You only live once. एक millennial term है YOLO. So practice that every day, every moment. Any questions? I hope that answers the question. We have to live for self or others. I think presently no other questions there. Okay. If anyone want to any questions, please unmute yourself and we can discuss your questions. So anyone have in your mind, please ask. Otherwise, there are many questions which are unsolved in our mind, and we cannot reach our destinations without getting answers of our questions. So don't hesitate to ask questions. So, नहीं मैम आपने ठीक कहा. हम तो फजूल सोचते हैं. कभी हमारे दोस्त ने कॉल बैक नहीं किया तो हम बड़ी चीजें सोच लेते हैं कि पता नहीं क्यों नहीं किया, उसने क्या किया, क्यों नहीं हुआ. लेकिन अब this is part of nature also sometimes. How to overcome this nature? Very nice question. I was going to leave you with a tool. I will tell you that. हमारा सबका नेचर है ओवर थिंकिंग. मैं भी करती हूँ, आप भी करते होंगे. एंड हम ओवर थिंकिंग में, हैव यू नोटिस्ड, हम हमेशा नेगेटिव चीजें सोचते हैं. हमारा जैसे ही कोई एनीथिंग दैट हैपेंस द वे वी डिड नॉट डिजायर, अगर हम नहीं चाहते थे ये हो बट वो हमारे डिजायर के खिलाफ होता है, हम ओवरथिंक करना शुरू करते हैं. इन दैट मोमेंट यू हैव टू पॉज. सो जैसे मैंने एग्जांपल शेयर करा, अगर मेरी फ्रेंड से लड़ाई हुई है और वो मुझे कॉल बैक नहीं करती है, मैं सोचने लग जाऊंगी कि उन्होंने मुझे कॉल बैक क्यों नहीं करा. what I will do instead is I will stop myself. I will again self coach. मुझे क्यों बुरा लग रहा है, and then I will use this tool. In my mind, I will count backwards. 5, 4, 3, 2, 1. This 1 is a sign कि मुझे negative thinking नहीं करनी. I have to focus on what is in the present. जब मेरी फ्रेंड मुझे कॉल करेगी तब उससे बात करेंगे ना. अभी क्यों सोचना है? क्रॉस द रिवर व्हेन द ब्रिज कम्स. अभी रिवर आई नहीं है और मैं दूर से ही सोचे जा रही हूँ, यार मैं डूब जाऊंगी, मैं डूब जाऊंगी, मैं डूब जाऊंगी. मैंने रास्ता भी एंजॉय नहीं करा और रिवर आती, और शायद ब्रिज आया भी नहीं, शायद रिवर थी ही नहीं. मे बी माई फ्रेंड वॉज बिजी, उसको टाइम नहीं मिला कॉल करने के लिए, वो भूल गई, बट हम सोचते रहेंगे. So whenever that is happening, you have to, so this is a proven tool, ये scientifically proven है. जबकि आपका माइंड किसी भी नेगेटिव जोन में जा रहा है, you have to do this. 5, 4, 3, 2, 1. Get up and stop doing what you're doing. Okay? So even when you wake up in the morning, आपका सुबह 5 बजे अलार्म बजा और आपको वर्कआउट करना है, बट आपका मन नहीं है वर्कआउट करने का. What will you do lying in bed? 5, 4, 3, 2, 1. I will get up and I will work out. There will never be days when you will be motivated to do something every time. आप कभी भी 100% motivated नहीं होंगे. आपको फिर भी चीजें करनी होंगी and that is going to be a choice for yourself. Negative या overthinking करके आपका फायदा हो रहा है? नहीं हो रहा. तो क्यों करना है? अपने थॉट को कॉन्शियसली वहां से हटाओ.
अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है एंड यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग कि पैसे कहाँ से आएंगे, ये अरेंजमेंट कैसे होगा, वो अरेंजमेंट कैसे होगा, हाउ विल आई स्टॉप माई सेल्फ? 5 4 3 2 1, मैंने कहा स्टॉप. इन दिस मोमेंट what can I do to get more finances? Can I start a side job? Can I learn a new skill? Can I start giving tuitions? So ask yourself, possibilities पर ध्यान दो. एक होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट और एक होता है प्रॉब्लम माइंडसेट. ओवर थिंकिंग में हम प्रॉब्लम माइंडसेट में फंस जाते हैं. ये हमारी ग्रोथ, सक्सेस सबको रोकता है. प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट में वी ऑलवेज फोकस ऑन सोल्यूशन. व्हाट कैन आई डू? आवर माइंड इज स्टिल वर्किंग. ओके, योर ब्रेन इज नॉट, आप सोते भी हैं तो भी आपका ब्रेन काम कर रहा होता है, बट यू हैव टू ट्रेन इट टू थिंक पावरफुली, थिंक इन द राइट डायरेक्शन. वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है, उसे वापस खींच के लाए. It will be difficult in the at the start, but it will get easier, which is why I said पानी भी पियो तो intention set करके, full focus, full concentration on drinking water. Don't let your mind go here and there. When you're talking to your friend, resolving a conflict, full concentration on the friend. When you're spending time with family, full attention on family. Don't think about work. काम में प्रेशर होगा, अगले दिन ऑफिस का टाइम शुरू होगा तब कर लेंगे ना. रात को उसके बारे में सोच के काम तो नहीं हो जाएगा सडनली. क्यों सोचना है तुम्हें? Does that help? Great. Do we great have point. more questions? जी. Yeah, I hope we will get your answers. So anyone want to any questions, please unmute yourself. Or you can also write in your chat box. Or So Nedika, although you have answered one thing, I will ask it in a different manner. Yeah. Like you said, just communicate. So right, so something has happened, although ठीक है, it's to communicate it better, but एक fear रहता है कि if I communicate, then in future they will do something like such thing कि वो adverse होगा या उसका against होगा. Like you said कि river आए या ना आए, हम पहले ही डरना स्टार्ट कर दिए. You have already answered. बट एक फियर रहता है माइंड में कि ओके, मैं सामने वाले को ये बोल रहा हूँ कि यू आर डूइंग व्हाट, जो मुझे पसंद नहीं है अभी इस वक्त हाल फिलहाल, तो इसको मत करो. राइट. और वो अगर वो बोलता है ठीक है अभी तो नहीं करते हैं, बट हमें एक डर रहता है कि यार ये फ्यूचर में कुछ ना कुछ करने वाला है, और या हम पास्ट में उसके साथ जुड़े और रिपीटेडली कुछ ना कुछ होता रहता है, तो हमें रहता है कि ये फ्यूचर में फिर रिपीट करेगा कुछ ना कुछ. अक्सर ऐसा होता है. ये फियर एक बैक ऑफ द माइंड में चलता रहता है. Yeah. So So there you are want to two add things. something? Right. Yeah. Please continue. Do you? So you want to add something from your previous example कि river आया कि नहीं आई. हम पहले ही डरने लगते हैं कि रिवर आ जाएगी और मैं डूब जाऊंगा, और कि पता नहीं ब्रिज भी बना हो ऊपर उससे आगे, like this. Yeah. So Pavanji, the question you asked has two things. I will first address the first thing. आपने कहा कि अगर कोई past में कुछ कर चुका है and we have the fear that they will repeat it in the future. Number one, any experience that has happened in the past, you should address it then and there. अगर मैं उस इमोशन, उस फीलिंग को तभी एड्रेस नहीं करूंगी तो वो मेरे फ्यूचर में बार बार शो करेगा. So for example, if I know that can you share an example with me or should I share? Okay, fine, I'll share. Yeah, मेरा एक colleague है and I know that colleague doesn't work on time. ठीक है, और मुझे पता है वो लेट बिल्कुल डेडलाइंस के टाइम पे मुझे काम भेजेगा. उसका ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है. If I don't talk, sit down and speak with him regarding that seriously, he will continue to do that and I will constantly live in fear कि वो आगे भी चल के यही करेगा. But if today he delays on some task and I sit down with him and I tell him, listen, I value the way you are working. However, I don't like, I feel under pressure when things don't happen on time. And it's not good because it leaves no room for revision. अगर हमें उस project को better करना है, हमारे पास time नहीं बचता. So I want you to start. So I want to understand that how can we focus on time management better. हम ये सारा काम पहले कैसे कर सकते हैं? So that is one way. You have to address things that have happened in the past. अभी जो हो रहा है उसको अभी address करो जिससे future में वो fear ना रहे. Second thing,
The fear, if I say something, you might feel bad about it. Why will you feel bad? There are two things again. One, my intention. My intention is not to make you feel bad. मैं आपको इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैं आपको hurt करना चाहती हूँ. Number two, I was given this example in one of my trainings. Okay, if say मेरा एक friend है और उसको मैं बोलूँ, hey listen, you're an idiot, उसे बुरा लगेगा. मैंने इतने गुस्से में गंदे एक्सप्रेशन के साथ बोला. बट इफ आई से hey listen, you're an idiot या what यार, वो मजाक में ले जाएगा. राइट? व्हाई दिस हैपेंस इज बिकॉज कई बार हमारा कम्युनिकेशन करने का तरीका गलत होता है. हमारी बात ठीक होती है बट हम उसे गुस्से में बोलते हैं. हमारी चॉइस ऑफ वर्ड्स गलत होती है. हमारी टोन, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन गलत होते हैं. आई कैन स्टिल कन्वे द सेम थिंग टू यू बट आई कैन स्पीक डिफरेंटली. मैं आपको आप मुझे कोई भी एक नास्टी सेंटेंस दीजिए, आई विल से इट टू यू एंड आई विल एंश्योर दैट यू डोंट फील बैड अबाउट इट. Any you can take. Give me an example. मैं बताता हूँ नैनिका आपको. आपको कितनी बार कहा है बिल्कुल भी काम नहीं करना आता? आपको 1000 बार समझा चुके हैं. तो जितनी बार भी आपको कहते हैं उतनी बार ही आप गलत काम करते हो. यू आर such a idiot person. You're such a useless person. Useless or idiot, anything. Okay, all right, okay, great. So if I had to say this, मेरा एक एम्प्लॉई है जिसको मुझे ये चीज बोलनी है, ठीक है, मैं उनको कैसे बोलूंगी? नंबर वन, आप कभी भी किसी से बात करेंगे आप उसको डायरेक्टली अटैक नहीं करेंगे. अभी आपने क्या करा, आपने सामने वाले को अटैक करा. अब हमारा ना लिजर्ड ब्रेन होता है, जैसे ही हमें कोई अटैक करेगा हमारे सामने डिफेंस आ जाता है. हम एकदम खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे. तो अगर मैंने अपने सामने वाले को कहा, अरे तुम्हें 1000 बार समझा दिया, तुम कोई काम ठीक से करते ही नहीं हो, तुम्हारे दिमाग में घुसती ही नहीं है बात, उस दैट पर्सन विल इमीडिएटली स्टार्ट टू डिफेंड. ही विल से, अरे आपने मुझे ठीक से नहीं समझाया, या मुझे समझ नहीं आया था, या मेरे पास टाइम कम था. फिर आप क्या करेंगे? यू विल अगेन अटैक. दैट पर्सन विल अगेन डिफेंड. यू विल अगेन अटैक. इंस्टेड, इफ यू हैड टू से दिस, हाउ विल यू से? लिसन, मुझे लगता है कि हम जो भी, लाइक आई शेयर, नो, मुझे लगता है कि आई हैव टोल्ड यू दिस इनफ टाइम्स और मुझे नहीं पसंद कि मैं तुम्हें बार बार ये कहूँ. आई थिंक तुम बहुत समझदार हो, बट मुझे बताओ मैं तुम्हें ये बात कैसे समझाऊं जिससे कि हमारा अगली बार से काम टाइम पर हो. सो नंबर वन थिंग यू हैव टू डू इज यू हैव टू अप्रिशिएट सामने वाला. उसको ये नहीं लगना चाहिए आप उसको अटैक कर रहे हो. आप कहो कि मैं जानता हूं तुम समझते हो, तुम्हारा और मेरा काम, हम दोनों का ऑब्जेक्टिव तो यही है कि काम पूरा हो जाए, बट काम को टाइम से पहले कैसे पूरा करें इसके लिए हम दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा. सो यू टेल मी, हाउ कैन आई बी ऑफ हेल्प टू यू टू एंश्योर दैट दिस वर्क इज डन नाइसली बिफोर टाइम? डू यू थिंक द अदर पर्सन विल फील बैड इन दिस सिचुएशन? Right. I don't know if you do this. Do you go and tell your wives कि तुम्हारा खाना अच्छा नहीं बना, मुझे मजा नहीं आया आज खाना खा के? Do you do this? Yeah, we can do For that. example, अगर खाना अच्छा नहीं बना तो आप उन्हें कैसे कहेंगे? Do you want to try? Anyone? Yeah, I know you cook very well, and आपने जो सुबह नाश्ता बनाया था, it's very fantastic. But sometime क्या होता है, सबके अपने अपने टेस्ट होते हैं. तो मुझे लगता है जो हमारा टेस्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है. अगर हम इसको दूसरे तरह से ट्राई करेंगे, डेफिनेटली इट विल बी मोर फैंटास्टिक. एज आई दिस इज माय वर्ड्स. Great. So that's a very nice way, but I will tell you, if the food is not nice, just eat it. हर जगह हर किसी को करेक्ट करने की जरूरत थोड़ी होती है. 90% कभी तो नहीं बनता अच्छा खाना. राइट. मैंने अभी जैसे भी जस्ट रिसेंटली किया, मेरे को किसी ने बोला कि जो हमने कैटरर किया है उसने खाना कैसे बनाया था और मुझे भी कोई फंक्शन करना है तो तुम भी वो कर लेना. मैंने कहा ठीक है मुझे दे देना, बट शायद तुम लोगों ने तीखा रखवाया हुआ खाना, मुझे हल्का रखवाना है तो मुझे हल्का रखवाना है. तो बस उसने पूछा खाना कैसा बनाया, मैंने बोला शायद तुमने तीखा रखवाया होगा, मैं हल्का बनाऊंगा. या so that's okay because see आपने उनके फीलिंग्स को वैलिडेट करा कि मे बी यू लाइक इट स्पाइसी, इसलिए आपने तीखा रखवाया.
but I have a different preference, but I still enjoyed the food. Yeah. So that's a very assertive. शांति सी में चुपचाप खा लो और शांत रहो. सही बात है. आपको हर टाइम यू डोंट हैव टू करेक्ट समवन. अगर आपको घर पे हार्मनी चाहिए, खा लो खाना. Agree. Great. Any more questions? आज आरती के क्वेश्चंस नहीं है. सर एक्चुअली सब कुछ मेरे को लगता है इतना रिजॉल्व हो चुका है ऑलरेडी. मैम ने इतने एग्जांपल्स दे दिए तो, बट फिर भी एक चीज मेरे माइंड में आ रही है. कई बार ये होता है कि हमें किसी की कोई बात बिल्कुल स्टक कर जाती है माइंड में और हमें समझ में नहीं आता कि हमने उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया था, बट क्यों उनका बिहेवियर हमारे लिए नहीं चेंज हो पा रहा. तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? Great, amazing question. So, I want to tell you, अगर आपको कोई बुरी चीजें बोलता है विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट, आपने कुछ नहीं करा बट स्टिल वो आपके साथ बिहेव भी अच्छा नहीं करते हैं, वो आपसे मिलते भी अच्छे से नहीं है, अंडरस्टैंड दैट एवरीवन्स बिहेवियर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ देयर ओन इनसिक्योरिटीज. अगर मैं अंदर से खुद से खुश नहीं हूँ तो मैं बाहर वाले को खुश नहीं रख सकती. So अगर आपसे कोई without context, if someone is being mean to you, there is something that they are suffering with inside. So if someone is being mean, so you know, I had a client in the past and she had a bad relationship with one of her family members और उसकी जो relative थी वो उसको constantly nag करती थी कि तुम ये अच्छा नहीं कर रही हो, तुम ये वो नहीं कर रही हो. And I had suggested her that, you know, I want you to go and have a heart-to-heart dialogue with her. उनकी कुछ पर्सनल इनसिक्योरिटीज होंगी जिनकी वजह से वो आपसे अच्छे से बात नहीं कर पा रही. सो नंबर 1, you never judge yourself based on what other people are telling you. तो आप उससे अपनी सेल्फ वर्थ को एसोसिएट मत करो. यू डिसाइड योर सेल्फ वर्थ. आप ट्रू हो, आप ऑनेस्टली अपने ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैरी आउट कर रहे हो, यस. आप खुश हो करके, यस. एंड ऑफ द टॉपिक. सामने वाला आपको एक्नॉलेज कर रहा है या नहीं कर रहा, यू हैव टू वैलिडेट योर फीलिंग्स. एंड देन इफ यू वैल्यू द रिलेशनशिप, आप बहुत ज्यादा उसको डियरली अपने आप पास होल्ड करते हैं, सिट विद देम, आस्क देम व्हाट डिड आई डू. मोस्ट केसेस में दे विल नॉट हैव एन आंसर बिकॉज यू हैव नॉट डन एनीथिंग. बट मैम समटाइम्स, सॉरी टू इंटरप्ट, बट कई बार हमें ये लगता है कि अगर हम उनसे बात करेंगे तो वो बाकी 4 लोगों से जाके बात करेंगे, देखा इसने ये बात की या कुछ, मतलब वो इनसिक्योरिटी सी कई बार थोड़ी बहुत हमारे भी दिल में होती है कि वो इस चीज को गलत वे में ना ले लें. तो मतलब sometimes you don't understand these things. Yeah, it's similar to what Pawan ji asked, no? How you communicate matters. आप किस तरह से उनसे बात कर रहे हो. अगर आप उनसे कहेंगे देखो तुम ऐसे करते हो, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आता, आप उनसे पूछो ना कि मैंने ऐसा क्या किया है that makes you feel so bad. What can I do to improve our relationship, because I really love you, I really cherish our relationship and I want to make it better, I want to make it happy. What can I do? Okay. और लोग क्या कहेंगे, दूसरी बात, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कहने दो वो क्या कहेंगे. Yes, that's true. Okay, ma'am. Thank you. Thank you for that lovely question. संदीप अग्रवाल सर, आप कुछ कहना चाहेंगे सर सेशन के बारे में? सेशन तो बहुत अच्छा था. मैडम ने जो बातें बताई वो तो ठीक ही है. मैं आपकी भी यही सलाह है, पत्नी को विरोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए. अगर नमक कम है तो बिना नमक के ही खा लो या चाहे आदतें बदलो. फिर बाद में वही कहेगी नमक ही नहीं था, तुमने ये नहीं बताया. तो फिर कुछ और अच्छा डायलॉग बोलना हो तो तुम तो जो भी बनाती हो उसी में स्वाद आ जाता है, ऐसा बोल दो तो सुख शांति बनी रहेगी. बिल्कुल ठीक है सर. कुछ एक्सेप्शंस तो हमेशा रहती है जिंदगी में और रहनी भी चाहिए. नहीं तो आप कुछ ठीक नहीं कर रहे, तभी आपके बाल भी देखो कम हो गए इससे. तो इसका मतलब पवन जी आपकी हालत और ज्यादा खराब है मेरे से भी. मेरे तो शादी के बाद ही उड़े हैं. मैं तो बोलता हूँ सबको कि मेरे तो शादी के बाद ही उड़े हैं. अरे तो वो तो शादी के बाद भी बचे रहे हैं 30 साल बाद तक भी उसी की बात है ना. वो तो हाँ सर. देखो 30 साल बाद भी हमारे थोड़े बहुत बचे हुए हैं अभी तक ऐसे. बिल्कुल सर, बिल्कुल. मैडम आपने कहा अपने को टाइम देना चाहिए, तो
कितना देना चाहिए दिन में आपके हिसाब से लगभग, मतलब सेल्फ आधा घंटा? मुझे आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। मैम क्वेश्चन इनका है कि अपने आप को दिन में कितना टाइम देना चाहिए? हाँ, तो एवरीथिंग डिपेंड्स, ये बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन है। Yes. हर इंसान से इंसान वेरी करता है। कुछ लोग 15 मिनट में भी अच्छा फील करते हैं। वन ब्रिलियंट टेक्निक आई विल टेल यू इज व्हेनेवर यू आर फीलिंग एंशियस और आपके पास खुद के लिए टाइम नहीं है, टेक अ डीप ब्रेथ, होल्ड इट इनसाइड, टेक द डीप ब्रेथ, अगेन थिंक अबाउट पॉजिटिव इमोशंस, होल्ड इट इनसाइड, एंड जब आप अपने मुंह से उस ब्रेथ को रिलीज करेंगे, रिलीज ऑल द नेगेटिविटी। 3 times you do this, I promise you will feel better instantly. So अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप 3 डीप ब्रेथ लीजिए। अगर आपके पास टाइम है, आप खुद को 6 घंटा दीजिए। डिपेंड्स ऑन योर शेड्यूल। आपके पास जितना टाइम है, आप कितना कंफर्टेबली निकाल सकते हैं, टेक इट आउट फॉर यू। इफ यू वांट टू सेट अ रूटीन, बिगिन विद 15 to 20 minutes. That's a good time. आपको प्रेशर भी नहीं फील होता है, and eventually you can increase if you feel the need for it. जो मैम आई आपने थिंक आई बताया हाईली था, डाउट कि कोई अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाता है। हाँ। मैंने भी तो जो जो वो था चेरिश और जो सेल्फिश में कन्वर्ट ना हो जाए, वो कितना टाइम गैप होना चाहिए? नहीं संदीप जी, आई थिंक एज सेड, मैम सेड अगेन, इट्स ऑन पर्सनल। लाइक मैं अपने लिए 4 घंटे आराम से निकाल पाता हूँ दिन में, जबकि आप मेरा शेड्यूल देखोगे तो मेरे घर वाले भी पूछते हैं कि बात कर लें एक बार, बट फिर भी मैं अपने लिए 4 घंटे निकाल लेता हूँ। सर अपने अपने बारे में सेल्फिश नहीं हुआ जाता। अपने बारे में जब आप टाइम देते हो, अपने बारे में टाइम देने का मतलब फोन से दूर रहना, अपने वर्कआउट पे ध्यान देना, अपने माइंड पे ध्यान देना, सेल्फ लर्निंग पे ध्यान देना, अपने आप को मेडिटेट करना। सो जो आप चीजें करेंगे, जैसे मोबाइल चार्ज करते हैं, वैसे अपने आप को चार्ज करेंगे। तो आप किन लोगों वैसे आपको दुनिया को देना है। आपने 2 घंटे में बैठ के माइंड्स के लिए कुछ कहा, जैसे आज का सेशन लिया, तो आप ये चीजें आप औरों को बताओगे। दैट इज कि एक फ्लेवर है, खुशबू है कि जो जानी जानी है। तो जितना ज्यादा टाइम अपने आप को दोगे, उससे कहीं ज्यादा वो सोसाइटी को मिलने वाला है। सो दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ सेल्फिश। और मैं अगर ये सेल्फिश है तो आपको सेल्फिश बनना चाहिए, हम सबको सेल्फिश बनना चाहिए अपने लिए और सोसाइटी के। एक में जो मैडम ने आज पॉइंट बहुत अच्छे बताए हैं, मैं एक उसमें ऐड करना चाहता हूँ जो हमारे जैन धर्म में भी है, अनेकांतवाद। वो ये कहते हैं कि एब्सोल्यूट ट्रूथ कुछ नहीं होता, और वो मेरे ख्याल से वाइफ के मामले में तो बहुत ही यूजफुल है कि एब्सोल्यूट ट्रूथ कुछ नहीं होता। जो भी आपको लग रहा है कि आपके लिए ट्रूथ है, वो हो सकता है उनके लिए ना हो। तो इसलिए आप उनको, अपने को उनके शूज में रख के देखो, तो कॉन्फ्लिक्ट शायद काफी कम हो जाए। Yeah, absolutely. So that's what being empathetic is, no? To understand that what is the feeling that the other person is going through. वो उन्होंने मेहनत करी, उन्होंने गर्मी में खड़े होकर खाना बनाया, and then if I can just sit on the table and praise it, it will make her feel happy. You have to appreciate. And Sandeep ji, to your question, अगर आपको लगता है आपको अपने लिए टाइम निकालने के लिए you feel that you're being selfish, I shared what selfishness is. सेल्फिशनेस इज जब आप सिर्फ खुद के लिए टाइम निकाल रहे हैं। आप 24 आवर्स में 15 मिनट्स अपने लिए कंफर्टेबली निकाल सकते हैं। 15 मिनट्स के लिए आप अपने गैजेट्स, फोन, लैपटॉप, टीवी सब बंद कर दीजिए। आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, आपको कौन सी एक्टिविटी से खुशी मिलती है, डू दैट। स्पेंड टाइम विद नेचर। आपके पास अगर पॉट्स हैं, आप उनका ध्यान रखिए, बुक रीड कीजिए, जस्ट फोकस, मेडिटेट कीजिए, लाइक सुनील जी शेयर, डू व्हाटएवर मेक्स यू हैप्पी। 15 मिनट इज नॉट सेल्फिश, इट्स नॉट। 15 तो कम है, मैं तो ज्यादा की बात कर। 15 से ज्यादा, हाउ मच टाइम डू यू थिंक यू वुड नीड फॉर इंडल्जिंग इन सेल्फ केयर? अभी तो संपूर्ण में ही 2-3 घंटे मैडम हम दे रहे हैं। जैसे पवन जी बता रहे हैं 3-4 आवर्स तो होना ही चाहिए। 3-4 आवर्स होना ही चाहिए। आपका शेड्यूल अलाउ करता है कि आप 3-4 आवर्स खुद को दे? 2 घंटे तो सुबह को सुनील जी करा देते और शाम को भी करना चाहिए हमको, मतलब बुक रीडिंग या टीवी वॉचिंग और व्हाटएवर। या सो सी, हम अक्सर ये गलती करते हैं, हम बहुत ही अनरियलिस्टिक गोल्स अपने लिए लगा देते हैं। someone asked me some couple of days back that I wake up at 8 o'clock. मैं चाहती हूँ मैं रोज सुबह 5 बजे उठूं और वर्कआउट करूं।
My answer to that person was, if you wake up at 8, how can you suddenly wake up at 5? आप 5 बजे उठ भी जाओगे, आप आधा घंटा खुश रहोगे, and then your head will start to feel heavy. 8 की जगह you start waking up at 7 or 7:30 because that's more realistic. आप 8 o'clock की जगह 7-7:30 उठ पाओगे. But if you set unrealistic goals कि अरे मेरा शेड्यूल मुझे अलाउ नहीं करता कि मैं अपने लिए 4 घंटे निकालूं, बट मैं सेल्फ केयर तो तभी कर पाऊंगा जब मेरे पास 4 घंटे हों. इट्स अगेन एन एक्सक्यूज मैकेनिज्म. आपको दिन में 15-15 मिनट करके अगर आप 4 ब्रेक्स ले सकते हैं, दैट्स इनफ. 1 घंटा हो गया. यू डिसाइड व्हाट्स टाइम फॉर यू, यू डिसाइड व्हाट सेल्फ लव फॉर यू. 3 डीप ब्रेथ लेने में कितना टाइम लगता है? 5 मिनट. आप काम करते हुए 5 मिनट लैपटॉप को बंद करके, आंखें बंद करके 3 डीप ब्रेथ लीजिए. You will feel relaxed. आप वर्कआउट करते हैं, आप सुबह 15 या 20 मिनट वर्कआउट कीजिए. So take out smaller breaks through the day. You don't need 4 hours at a stretch to sit and work on your self-care. I don't get that much time. I am also working morning to night. Nobody has that kind of time. Some people who do, they are lucky. Great. In my schedule, how can I fit moments of self-care? I do that. मैं काम कर रही हूँ, मैं एग्जॉस्टेड फील करती हूँ, मैं थोड़ी देर नीचे जाती हूँ, अपनी फैमिली से बातें करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं वापस आ जाती हूँ 15 मिनट में अपने कमरे में काम करने. सो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं आई थिंक मोस्टली अभी हम सब. सो इट्स इजियर टू डू दिस. सो डू दिस. छोटे छोटे ब्रेक्स लो, अपने लिए अपने ऊपर ध्यान दो. इफ यू हैव पेट्स, स्पेंड टाइम विद योर पेट्स, cuddle with them. If you have plants, I love speaking to my plants. I am very fond of gardening. I do that. Do whatever. If you sing, sing for some time. Sit back and sing. Relax. And then focus on work again. बेटर है दूसरे भी हमारे शेड्यूल को जाने कि जो हमारा मी टाइम है उसमें क्लाइंट है या घर वाले भी, उनको भी पता हो ये इनका अपने लिए टाइम है, उसमें इनको डिस्टर्ब नहीं करना, तो और बेटर होगा. Correct. हम एक्चुअली उसमें भी तो यही देखना पड़ेगा ना कि what I want and what I need. Yeah, absolutely. I see all of you are taking back points. I'm so happy. वांट और नीड में अगर क्लाइंट को पता हो सुबह 8 से 9 इनको कुछ करना ही नहीं है, कॉल ही नहीं लेंगे, तो वो सबको वैसी आदत पड़ जाएगी. और अगर ये हो कि इनको तो कभी भी कर लो फॉर ग्रांटेड, फिर वो आपको लेगा. हाँ, so see, you have to set boundaries. आप अपने क्लाइंट्स को कब तक एड्रेस कर रहे हैं, एंड दैट ऑल्सो डिपेंड्स आपके लिए वो क्लाइंट कितना इंपॉर्टेंट है. तो अगर मेरे लिए कोई क्लाइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर वो मुझे 9 PM के बाद कॉल कर रहे हैं, आई माइट टेक देयर कॉल. उसके लिए पहले तो अपने को इम्पोर्टेंट बनाना होगा ना कि क्लाइंट नीड्स यू, यू डोंट नीड क्लाइंट. यस. और यू कैन ड्रॉप अ मैसेज टू द क्लाइंट दैट हे, आई एम बिजी राइट नाउ, हाउ अबाउट वी कनेक्ट टुमारो मॉर्निंग एट 9 AM. डज दैट वर्क फॉर यू? I have seen with 2-3 my friends की जो सपोज इवनिंग में जॉगिंग करना है उनको 6 to 8, तो एवरीबॉडी नोज कि 6 to 8 में वो कॉल ही नहीं लेंगे या उनसे बात ही नहीं हो सकती, तो लोग अपने शेड्यूल को रीएडजस्ट उसी हिसाब से कर लेंगे कि 6 to 8 तो इनसे कुछ होगा ही नहीं, तो दे विल नो योरसेल्फ. दैट्स अमेजिंग. दैट्स व्हाट सेटिंग बाउंड्रीज इज. आपने बाउंड्री सेट कर दी कि 6 से 8 मेरा टाइम है, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा. But then 6 से 8 actually use it to focus on yourself. उस टाइम काम के बारे में फिर नहीं सोचना, किसी और चीज के बारे में नहीं सोचना. बेटर तो यही होता है मोबाइल भी साथ ना ले जाओ अपने, ये से काम करना है तो. Yeah, the biggest problem right now is these gadgets. Trust me, phone, TV, laptop, because you're constantly surrounded by social media and these news that constantly bog up your mind. टीवी भी नहीं रहा है सच, तो व्हाट्सएप ही बिगेस्ट प्रॉब्लम है. Limit your time, limit your screen time, monitor कीजिए. I don't spend time more on my phone unless it's work, more than half an hour. I don't scroll social media more than that. Read news, scroll social media, whatever it is. Manage your screen time. या संदीप सर, मैं ये कहना चाहूंगा आपको, जितनी भी चीजें बनी हैं, अगर आप वेपन्स की बात करें, मोबाइल की बात करें, किसी भी चीज की बात करें, so everything is made for make our work easy. हाँ, बट हमने उसको क्या कर दिया है, हम डिस्ट्रैक्शंस की तरफ खुद लेके जाते हैं. हाँ. जो AK-47 बनी हुई है, उसी AK-47 से हमारे बॉर्डर सेफ हैं और उसी AK-47 से तालिबान अपने लोगों का मर्डर कर रहे हैं.
So this is not a problem. AK-47 is not a problem. Problem is our mindset. हम उससे कर क्या रहे हैं? अगर हम लैपटॉप की बात करें, फोन की बात करें, फोन के माध्यम से ही हम आज डिस्कस कर पा रहे हैं, फोन के माध्यम से हम वर्कआउट करते हैं। फोन वर्क फ्रॉम होम में तो व्हाट्सएप और लैपटॉप से ही काम चला 90%, अदरवाइज तो। सो देयर आर मेनी पॉजिटिव थिंग्स। हाँ, डेफिनेटली जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, उन डिस्ट्रैक्शंस को हमने खत्म करना है, और जितनी भी अच्छी चीजें हमने लेनी है, आज हमने कुछ भी चीज लेनी होती है, करियाने का सामान लेना है, कुछ भी लेना है, एवरीथिंग इज ऑन आवर फोन. So this is the biggest achievements in today's world. But what we are doing, we are spending too much time on Facebook. मैं एक वीडियो देख रहा था फेसबुक के ऊपर, कोई एंटरटेनमेंट का वीडियो था, ऐसे ही मैं स्क्रॉल कर रहा था, मैंने देखा 30,000 लोग उसको देख रहे थे, तो उसमें आता है लिखा हुआ 30,000, उसमें मैं भी उसमें से एक था, तो मैंने देखा 30,000 लोग इसको देख रहे हैं, मैंने इमीडिएट उसको बंद किया। और इतने ज्यादा चीजें हैं, लोग कहते हैं टाइम नहीं है, टाइम सबके पास है, we are just wasting your time. So it's better if we use the gadget as per our choice. हमें उसका slave नहीं बनना, we are the owner, we are the real employer of that particular gadget. We are not employee or slave of our gadget. This is my opinion. Yeah, absolutely. That's a wonderful point, Shiv. Yeah, thank you, ma'am. It's a great session, great interactive session. I really salute my SampoornMe family members who was with me. You are my power, and you are the power of SampoornMe family. उम्मीद करता हूँ आपकी लाइफ में, और खास करके मेरी लाइफ में तो काफी चेंजेस हो रहे हैं, सो आपकी लाइफ में भी डेफिनेटली कुछ एड ऑन हो रहा होगा, और उम्मीद करूंगा इस खुशबू को आप और लोगों पे लेके जाएं, और नए लोगों से बात करें। जितना ज्यादा लोगों से बात करेंगे, उतना अपने आप को भी हम पॉलिश करते हैं। सो दिस वाज माय थॉट, एंड नेक्स्ट वीक मैं सेशन ले रहा हूँ। मैं सेशन लूंगा जैसे कि हम हेल्दी लाइफस्टाइल को नहीं बना पाते, हमारे सामने काफी प्रॉब्लम्स आती है, हम चाहते तो बहुत कुछ है, चाहत बहुत सारी है, बट उसको अचीव नहीं कर पाते, तो कैसे एक हेल्दी लाइफस्टाइल को बनाया जाए, कैसे एक अच्छे रूटीन को सेट किया जाए। सो नेक्स्ट सेशन विल बी ऑन दैट पार्ट, सो आई विल टेक दैट सेशन। चैट बॉक्स में अपना नंबर भी लिख दो, मोबाइल नंबर है। या आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो नए सेशंस में एज ए गेस्ट जुड़े हैं, प्लीज इसमें अपना फोन नंबर रख सकते हैं, लिख सकते हैं, ताकि हम अपने आपके पास हमारे फर्दर प्रोग्राम्स की अपडेट्स आपके पास आती रहेंगी। और मैं आपको सेशंस के बारे में बताना चाहता हूँ। डेली हमारे 5 सेशंस रहते हैं वर्कआउट के। 2 मॉर्निंग में योगा सेशन है 6 to 7 एंड 7 to 8, एंड दिन में 4 to 5 बच्चों के लिए डांस सेशन है, घर पे बच्चे डांस का प्रोग्राम कर सकते हैं। और 6 to 7 हमारा सेशंस डांस फिटनेस का रहता है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और शाम को 7 to 8 होम वर्कआउट सेशन रहता है। तो जो भी आपको कंफर्ट है, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से ज्वाइन करें। संदीप जैन सर हमारे साथ हैं, वो हमारे एक आइकॉन है हमारे लिए, उनकी प्रेजेंस हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंस मायने रखती है। संदीप अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, इनके ऊपर इंपॉर्टेंस हमारे लिए काफी मायने रखती है। सो थैंक यू एवरीवन। आई वुड लाइक टू इनवाइट पवन अरोड़ा जी, जिनका ये प्रोग्राम है, जो इस प्रोग्राम को मैनेज करते हैं। सो फॉर कंक्लूडिंग द प्रोग्राम, नैनिका जी अपना मोबाइल नंबर लिख दो चैट बॉक्स में। We will share, sir. I think, and thanks, Nanika ji. I think I apologize that I am not able to join at beginning, so I was on the way. So, but I heard you from last 1 hour, so that's very wonderful session. I think हम जो सब यहाँ भी डिस्कशन भी कर रहे थे, आप भी सब कर रहे थे कि अपने लिए टाइम निकालना, जैसे कि अभी सुनील जी को भी पता है, मैंने एक 15 मिनट्स मेडिटेशन का लास्ट टाइम शुरू किया था, जो सब कर पाए। सो मेरे से कोई बोलता था टाइम नहीं निकलता, तो मैंने बोलता था कौन सा सीरियल देखते हो टीवी में, ये वाला देखता हूँ, बहुत पसंद है, छोड़ दो, अपने आप आधा घंटा निकल गया। संदीप जी, जैसे हम अभी टाइम की बात कर रहे थे, तो मैं टीवी नहीं देखता हूँ। कल इनफैक्ट मैंने खाने के समय, तो स्ट्रिक्ट रूल है कि मेरे घर में टीवी नहीं चलेगा, बट मेरी वाइफ कोई इंटरेस्टिंग मूवी देख रही थी, उसने बोला नहीं बंद करूंगी, मैं दूसरे रूम में चला गया खाना खाने। बट दैट्स यू हैव टू वेरी, मतलब अगर आपने टाइम ढूंढना शुरू किया तो बड़े प्यार से मिलता है, बहुत प्यार से मिलता है, और धीरे धीरे करके ये कब 1, 1.5, 2 घंटे और 4 घंटे में बदल जाएगा, पता नहीं चलेगा। सो मैं योर सेशन वाज वेरी वंडरफुल, एंड आई होप कल को कोई हमारी कुछ क्वेरीज भी होंगी, तो वी विल come back to you for our all queries. And with that, I thanks from all the participant side for this wonderful session.
So I also concluding that मैंने यहाँ पे एक शेयर किया, लिंक शेयर किया है. अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप नैनिका मैम के नाम से आप जरूर गूगल रिव्यूज दें. ये मोटिवेशन मिलेगा हमारे को सेशंस के बारे में. तो नाउ टू पवन जी. right. Absolutely. Thank you so much, everyone. I really thoroughly enjoyed taking this session, and I look forward to all your questions. Please reach out to us, and I will be happy. Thank you so much for having me. Thank you, ma'am. Thank you, Thank you. ma'am. Thank you from. Right. Thank you everyone for participation.